Hello, friends. Welcome to my channel. Today we are starting with one of the finest English literature poem named as Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. So, before analyzing the poem further, it is important for us to know more about the poem and the poet. So, this poem, as you already know, is written by the most powerful Bengali writer Rabindranath Tagore. The original Bengali version of the poem is called as Chitto Jeta Boishunyo. Yes, students, this poem was originally a Bengali poem, but later it was translated into English language. It has 11 lines without a rhyme scheme. Keep in mind if the question comes, this poem has no rhyme scheme. It was published in the year 1910 before India gained its independence from Great Britain, and it was in the midst of protests and demonstrations against the common enemy of the country, that is Britishers. Students, before starting with the poem, it is important for you to know that this poem is actually a prayer that the poet was praying to the God that he has a dream of a country which he wants to see in the future, and he hopes that it will be created after the independence from the British rule. The next slide, you can see the first images of the Bengali version of this poem, and the other one is the Gitanjali book's cover page. So, Rabindranath Tagore was the author of Gitanjali book. This book was profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse. Take a note that he was the first non European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. Rabindranath Tagore was the first non European जिसे ये Nobel Prize दिया गया था literature के लिए 1913 में. This poem is one of his vastly read and discussed poem. It was originally composed in Bengali और उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था. ये पोएम जो है ये नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि से ली गई है. ये जो नोबेल प्राइज था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने रिटन कर दिया था बाय शोइंग हिज रिटन कर दिया था बाय शोइंग हिज सपोर्ट टू ऑल द people who have lost their lives in the Jallianwala Bagh massacre. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, आप सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में ही नहीं पढ़ोगे बट आप ये भी देखेंगे कि टैगोर किस तरह से गॉड से अपील करते हैं फॉर सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो मूविंग अहेड, before analyzing the poem, students, it is very important that you read the poem twice and thrice so that if any question is asked from the poem, it will be easier for you to answer. Over here, we will also read the poem once before starting with line by line analysis. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into the heaven of freedom. My father, let my country awake. What a beautiful poem written by Rabindranath Tagore. You will also understand this once we are done analyzing the poem line by line. So let's start with the first four lines. Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free. Yeah, what the poet is trying to say over here. The poet starts to imagine what he would like his country to be like. पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि वो अपनी कंट्री को कैसे देखना पसंद करेंगे, कंट्री के लोगों को कैसे देखना पसंद करेंगे. रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो अपने सभी देशवासियों को फियरलेस देखना पसंद करेंगे. He want all his countrymen should live his life without any fear in their mind. Instead, they should keep their head up fearlessly and have confidence in themselves. ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट यस वी कैन डू इट, ना कि डर होना चाहिए कि नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे. वेयर द नॉलेज इज फ्री, नॉलेज शुड बी अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स. दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड एडमिट स्टूडेंट्स ऑफ ऑल रेसेस एंड क्लासेस. स्टूडेंट्स, ये पोएम तब लिखी गई थी जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे और उस एरा के टाइम पे, उस जमाने के टाइम पे अपर क्लास
और ब्रिटिशर्स के जो बच्चे हुआ करते थे, सिर्फ उन्हें ही ये राइट्स मिलता था टू गेन दी नॉलेज इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो पोएट यहाँ पे बोलना चाहते हैं दैट नॉलेज तो सबके लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा देश, अगर नॉलेज होगा सभी के पास, तभी तो वो प्रोग्रेस करेगा। एजुकेशन इज द ओनली थिंग विच कैन लीड अ कंट्री टू प्रोग्रेस। So the knowledge should be free to all the citizens. There should not be any kind of partiality या भेदभाव नहीं होना चाहिए on the basis of class या basis of the gender. कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. Further, where the world has not been broken up into fragments. Yeah, पोएट एक ऐसी दुनिया चाहते हैं, वो एक ऐसी दुनिया को ड्रीम कर रहे हैं जो फ्रेगमेंट्स मीन्स कोई पार्ट्स में ना ब्रोकन अप हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे पोएट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मतलब पोएट कितने ब्रॉड माइंडेड थे। वो यहाँ पे कंट्री की बात नहीं कर रहे, ही इज ओवर हियर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। ही वांट्स द वर्ल्ड टू नॉट बी ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी इतने रीजन्स है, देयर आर वेरियस पीपल, राइट। तो ये हमारे बीच में ये जो वॉल्स बना रखी है, हमने दीवारें बना रखी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ब्लैक्स एंड वाइट्स के बेसिस पे जो हमने डिवाइड किया है पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को, ये नहीं होना चाहिए। जो एक फ्यूचर वर्ल्ड होगा, द फ्यूचर प्लेस जो पोएट इमेजिन कर रहे हैं, ओवर देयर द पीपल शुड बी यूनाइटेड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स फॉर सुप्रीमेसी। दे शुड फाइट टुगेदर अगेंस्ट द कॉमन एनिमी टू डिटरमाइन देयर कॉमन फेट। यहाँ पर इंडिया में उस वक्त हम सब का कॉमन एनिमी थे ब्रिटिशर्स, और हम सब का कॉमन गोल था टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम देम, राइट। सो द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट वी शुड बी यूनाइटेड, and then only we will be able to fight with the common enemy. This narrow domestic wall should be removed. We all should be having a broad mindset where the country is fighting together. Moving ahead with the next line, where words come out from the depth of truth, where tirelessly striving stretches its arms towards perfection. Yeah, first line, where the words come out from the depth of truth. In these lines, the poet says that in India of his dreams, everyone should speak the truth. हर कोई सच्चाई के साथ जीना चाहिए। अपने फायदे के लिए झूठ बोलना या अपने प्रॉफिट और एडवांटेज के लिए सेल्फिश रीजंस की वजह से कोई इंसान झूठ नहीं बोलना चाहिए। No matter what, how bad the truth is going to be, but still you should always follow the path of truth. Every man should make an effort to improve yourself, where tireless striving stretches its arm towards perfection. Here the poet is trying to say कि हम सबको continuously hard work करते रहना चाहिए, continuously अपने efforts को improve करते रहना चाहिए till the time we don't reach to the stage of perfection. Yes, अगर हम perfect होंगे, हम हमारी family को perfect करेंगे, and in this manner the world, the country is going to be perfect, right? So the first step towards perfection is self-perfection. So keep on putting the efforts to improve, keep on doing the hard work till the time you reach towards perfection. Next, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Yeah, the poet over here is trying to say the clear stream of reason means there should be a logic. The logic should not lost its way into the dreary desert sand of a dead habit. A dead habit which is very outdated one, the habit which is not going to gain you anything. By these lines, the poet means that he imagines the reason to be an unsullied stream of water through which one can progress easily and without encountering too many obstacles. On the other hand, he is also trying to say that he imagines a habit to be like a desert. The stream of reason seems to be him as lost in the sands of habit. Reason तो पता नहीं कहाँ खो गया है. Nobody is asking why they are following this thing. They are just blindly going behind something. This means that he is saying that people of his country blindly believe in superstitions at present, and he is requesting all his countrymen to question this belief through the application of logic. अगर आप blindly किसी भी चीज को believe करते जाओगे बिना उसका logic जाने, तो आप कहीं नहीं बस एक desert की तरफ चले जा रहे हो, which is a dead end. Superstition देख लो,
सुपरस्टिशियस लोग कैसे होते हैं? अगर किसी ने कहा कि आपको पता है बिल्ली के रास्ता काटने से आपके साथ बुरा होगा, तो बस उन्होंने उसे मान लिया। बिना ये जाने, बिना अपना लॉजिक लगाए, बिना उसके पीछे का रीज़न जाने अगर आप कोई भी चीज़ फ़ॉलो करते हैं, तो वो गलत है। सुपरस्टिशियस लोग तो गलत है ही, पर उसे फ़ॉलो करने वाले भी गलत हैं। पोएट बोल रहे हैं कि जो उनका फ्यूचर इंडिया होगा, जो वो ड्रीम कर रहे हैं, उनका ड्रीम कंट्री ऐसे होगा जहाँ सभी लोग लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। तभी तो ये देश प्रोग्रेस करेगा, तभी तो ये देश डेवलप करेगा। अगर आप रीज़न नहीं पूछ रहे हो, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा? Moving ahead with the lines, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. The poet over here is trying to say, where the mind is led forward by thee. Thee is nothing but an old English word which means you. पोइट बोल रहे अगर ये जो कंट्रीमैन है अगर इन्हें लीड आपने किया ओवर हियर हु इज यू किसको एड्रेस किया जा रहा है यू इज बीइंग एड्रेस टू गॉड कि अगर भगवान आपने हम सबको लीड किया तो वी विल बी हैविंग अ ब्रॉड माइंडसेट we will be having both the thoughts and the actions. We will be trying to raise the questions. We will try to put the logic behind it. So, for that, we need God, you to control us. It is said that this earth, this human being, is all being developed by God. You are the one who have developed us. Then you kindly control our mind. You control us so that we do not turn into a devil person. Our thoughts and actions will always be observed by you. If they were to do so, then India would be transformed into a heaven. Yeah, the poet over here is trying to say that into this world where it is led by God, अगर हम सब हमारे thoughts and logic and actions को बराबर से देखें, then this country will turn into a heaven. A heaven where all citizens would be truly free. They will be having all the freedom. My father, here my father is nobody else than the God. यहाँ पर पोएट हम फादर किसको एड्रेस कर रहे हैं गॉड को और वो ये प्रेयर कर रहे हैं दैट गॉड प्लीज लेट माय कंट्री बी अवेक 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 किस चीज से यहाँ पे पोएट कह रहे हैं दैट द कंट्री शुड बी अवेकन फ्रॉम द स्लीप ऑफ सेल्फिशनेस laziness the falsehood the illiteracy the superstitions that are there around us from all these things the country is needed to be awake and for that only god can show us the right way through which we can have a broad mind and we can use our thought and action wisely so this is how the poet is trying to say यहाँ पे पोएट एक मैसेज दे रहा है कि जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक्चुअल में फाइट किया था तो उन्होंने एक फ्यूचर कंट्री का एक पिक्चर इमेजिन किया था और पोएट वही कह रहे हैं कि हम उस उनके जो सैक्रिफाइसेस है उनको हम वेस्ट नहीं होने देंगे हम उस फ्यूचर इंडिया को बनाएंगे जो जहाँ पे हम सब को इक्वल राइट्स मिल रहे वी विल बी हैविंग फ्रीडम एजुकेशन फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम पॉलिटिकल फ्रीडम we will be free from all the superstitious things. And this is what the poet is trying to pray to God and requesting God to please grant us this country, a country where we have a freedom, a country which will be transformed into a heaven. Written by Rabindranath Tagore. These are the certain meanings which we have already discussed in the poem. Thank you so much, students, for your time. I hope you have understood the poem. In the next session, I will be coming up with the figures of speech of the poem as well as we will be doing the critical appreciation of the poem. So for that, kindly stay tuned. Also subscribe to my channel so that you will get the timely updates of my new video. Thank you so much once again.